News Services Division of All India Radio presents Northeast Diary. Good evening. Welcome to this edition of Northeast Diary. Here we bring you the latest developments from India's unexplored Northeast region. December is here, and Northeast is adorning the colors of warm winters. December is a time to take stock of the year that was and the year that could have been. It is a time to look ahead to the upcoming new year and make preparations and new resolutions. Today, we shall talk about Longling district of Nagaland, which is also known as the land of handicrafts. We will also take you to Sikkim, where the country's first bio-village 2.0 has been set up. Friends, youth are the future of tomorrow. In Arunachal Pradesh, Don Bosco Youth Centre, which is a non-profit organization in Itanagar, is going to start an initiative titled Youth at Risk. It will try to reach out to the vulnerable youth of the society and try to rehabilitate them. A report. Don Bosco Youth Centre in Itanagar was established in 2007, and since then it has been providing selfless services to the people of Arunachal Pradesh. Under the organization, various initiatives like free education program, schooling, and one of the major initiatives like Child Helpline Itanagar are being done, and the response from the society is exceptional. Now the center is going to launch the Youth at Risk program in the capital city. Further, Sunny Minch, coordinator, Don Bosco Youth Center, Itanagar, says that the target youths of the initiative are those who need care and counseling due to drug abuse and showing them a better way of life. I'm opening up this center also for another venture, which is a big venture, which we, Don Bosco India, we have launched, is the Youth at Risk. So this is actually 18 plus and above. Not only catering to the children like the child line, but 18 and above also we have so many youngsters who are now desperately need our attention, our care, and our support, guidance. And so I think this is the best center for Itanagar in the West to begin of this work. Now youth at risk, by the word already we know. So risk can be many things. What we have found here and what the analysis, the data collections that we have done, that most of the youngsters parents are also afraid. Also one thing that youngsters are going to drugs now. And this is the main thing actually. They are at risk now. You see they have got into this in drugs, and as a result they are destroying themselves. Of course, youth at risk does not mean that they are coming from outside and they are being marginalized or they are immigrants. No, it is not. We don't have that kind of youth. It is our own local youth, our own children of this place. They are at risk. They are in big problem. And so our situation in Itanagar is that there is no migrant youth who are coming and then they are being exploited. More than that, our own children, our own youth of this place, they are in great difficulty. They are in problem. They are at risk. High risk because their lifespan itself is, they are destroying themselves. One thing is the drugs. Secondly, with the latest technologies, the mobile, they are all risk in the sense that they are disoriented. They are no more oriented. Like once upon a time, okay, I will become, after studying this one, I am going to become doctor and engineer. Previous few years generation, they did. Today those are engineers, if you ask them, they will give this motivational talks. Today's children, they are not of that. Today they are all disoriented. They are not able to focus themselves. They have been deviated. And so this is also a risk. It's a big factor that will play in their life. So that's why in Don Bosco Youth Center I am trying to begin this center. Also giving space to this such kind of youngsters who are at risk. Counseling, that is a big thing. So counseling. And also to help them, if required, rehabilitation centers, which we don't have here. But at least we can help them, like for example in Guwahati or in Dimapur we have Salom. We can put them there, we can send them there. Or we have got in Dibrugarh, what is called VG Hospital, Mercy Home, and they can be helped out in this way. Drug abuse is a major issue today and it needs immediate attention. The initiatives taken by the government are not enough to curb the menace of drug abuse in the country unless the educated, conscious people and NGOs come up and start creating awareness among the youth.
Our society needs more people like Father Means, organizations like Don Bosco Youth Center, and initiatives like Youth at Risk to make a better tomorrow for the coming generation. For Notice Diary, this is Rakesh Dole, Air News, Itanagar. In Meghalaya, the 123rd Sengkutsnem Festival was celebrated with pomp at Viking Ground, GIO, in Shillong last week. Hundreds of Seng Khasi faithful thronged the venue to join the celebrations, while uneasiness loomed in the city, which bore a morose look after the violence which erupted at Mukro village, West Jantia Hills. Our correspondent takes a look at the festivities. This year's Sengkutsnem celebration was grand as there were no restrictions on one of the highlights of the festival, the procession. For the past 2 years, the celebration had become a low-key affair due to COVID-19 restrictions. The annual procession witnessed participation of a large number of people as they made their way to the venue by singing and dancing. At the venue, traditional music filled the evening air as performers took center stage and enthralled the audience. The annual Sengkutsnem festival is celebrated to commemorate the Seng Khasi movement to preserve, protect and uphold the indigenous Khasi culture. On this day in 1899, 16 young Khasi youths formed the Seng Khasi, an organization which would protect their indigenous culture and unique language in the face of British onslaught. Research scholar on Khasi tradition, Francis Khongwar, shares more details about the Sengkutsnem festival. Sengkutsnem is basically an annual gathering of the Khasi Punar community belonging to the indigenous faith and belief. This gathering is held every year on the 23rd of November. This day was declared a memorable day for the awakening of the Khasi Punar community. Sengkutsnem is organized by Seng Khasi Sengkemi, a social religious organization which stands for the protection and preservation of Khasi Jaintia culture, including religion, rites, rituals, and moral values. Sengkutsnem is a reactionary movement of 16 visionary leaders of the community to make the people aware of the impending danger that Christianity and modernity were making on the Khasi Jaintia society. These leaders, who had their education from the colleges and University of Calcutta, started establishing schools, printing press, so that traditional values, customs and practices could be effectively imparted to the people to keep the indigenous faith alive. The day marks the beginning of a movement and awakening of the Khasi community to preserve the existing and unique traditions. This is Rustam for Notice Diary from Air News, Shillong. Shanti Rai, a mountaineering instructor from Sikkim, has become the first person from the state to be elected as a member of the Indian Mountaineering Foundation. IMF is the country's apex mountaineering body. Here is a report from our Sikkim correspondent. 38-year-old Shanti Rai is a mountaineering instructor at the Indian Himalayan Center for Adventure and Ecotourism, Chemche, Namche district in Sikkim. She was elected for lifetime membership of IMF after securing the highest number of votes in the recent 58th annual general meeting of IMF held in New Delhi. As an IMF member, she will now play a major role in decision-making for mountaineering in the country. Shanti Rai shares her mountaineering journey. I am a professional Indian mountaineer. I started my mountaineering in the year 2010 and I completed my basic mountaineering course from Atal Bihari Vajpayee Institute of Mountaineering and Allied Sports, Manali, and advanced mountaineering course from Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling. After completing these courses, I started climbing in Indian Himalayas. So far, I have climbed more than 30 peaks in India and also in Nepal, and I also led so many mountaineering expeditions in India. In the year 2021, I did the winter ascent of one of the most technical peak in Nepal, that is Mount Amardabalam, and have made a record of the first Indian winter ascent of Mount Amardabalam. I have also trained many youths from the different corners of the country, and I feel very proud that many of them have been able to climb the world's highest peak, Mount Everest, and also many other mountains in the world. Apart from this mountaineering, I also do skiing,
mountain biking and yoga. A certified Indian mountain leader, Shanti Rai has achievements in several other areas. She cycled 2,500 kilometers in the Western Ghats from Kuch to Kochi in January 2014. Besides cycling in different mountain terrains in Uttarakhand, Himachal Pradesh, Ladakh and Sikkim, she is also a certified yoga teacher with Namo Dikshit and Saikia Sarkar. This is Dashang Mugutia for AIR News Sikkim. Due to several kinds of visual impairments, many people all over the world lose their vision. We can give them the gift of light by the simple step of eye donation. Blindness is a major cause of concern around the world today. According to the World Health Organization or WHO, after cataract and glaucoma, blindness is mostly caused by corneal impairments. Most of these impairments are curable, especially through eye donation, which refers to donating one's eyes after death. Just like any other body organ, the cornea of the eye can also be donated after death, which will render vision to the blind. So, the desire for eye donations is gradually picking up among the common people. Here is a report from a correspondent from Aizawl. In India, approximately 68 lakh people suffer from corneal blindness in at least one eye. Of this, 10 lakh people are blind in both their eyes. The National Blindness and Visual Impairment Survey 2019 reported that corneal blindness was the leading cause of blindness among patients aged less than 50 years in India, which accounts for 37.5% of the cases. According to the specialist doctors, in most cases, loss of sight can be corrected through eye donation. After the death of a person, various organs can be donated and can be surgically transplanted to the patients, and one such organ is the eye. By donating eyes after death, a corneal blind person can see again through a surgical procedure known as corneal transplantation. By this surgery, the damaged cornea is replaced by a healthy cornea from the eye donor. So, the eye banks are playing a major role in giving back vision to a patient. In Mizoram, the first eye bank was established at Civil Hospital in Aizawl in 2008. It made its first eye transplant the next year. During the last 15 years of its functioning, 447 cases of successful corneal transplant were done. Also, there are about 8,500 pledges by donors and 932 cornea collection. Talking to AIR News, Councillor of the Eye Bank of Civil Hospital, Mrs. Mimi Zodinthari, said that people of the state are now quite aware of eye donations. Mass awareness campaigns are also periodically being taken through local media. She said, Eye Bank is inaugurated on 31st July 2008 and the first corneal transplant has been performed on 25th September 2009 in collaboration with Dr. Kalyan Das Sri Shankara Deva Netralaya Eye Bank, Guwahati. Since then, 87 keratoplasty has been done so far at Civil Hospital Aizawl. In addition to this, hundreds of keratoplasty were done in SSN Guwahati and also at Susrut Eye Foundation and Research Center, Kolkata, through cornea distribution from Mizoram Eye Bank. Mizoram State Cabinet has also passed the Transplantation of Human Organs and Tissue Amendment Act 2011. Mizoram Eye Bank is being proposed as SOTO, which is State Organ Transplant Tissue Organization. In Mizoram, the people are now quite familiar with eye donation, especially after the opening of eye bank at Civil Hospital. Officials said that since there are more than 300 recipients waiting in line, the donated eyes will be transplanted immediately after undergoing a series of tests. They also urged the people of the state not to be hesitant to register as an eye donor at the eye bank. For Northeast Diary with Subhashis Chanda, Irene from Aizawl. The northeastern state of Tripura is the first in the country to set up BioVillage 2.0. For this initiative, Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat program appreciated the efforts taken by the state's Directorate of Biotechnology under the Department of Science and Technology.
त्रिपुरा के कुछ गांवों ने भी बड़ी अच्छी सीख दी है। आप लोगों ने बायो विलेज तो जरूर सुना होगा, लेकिन त्रिपुरा के कुछ गांव बायो विलेज 2 की सीढ़ी चढ़ गए हैं। बायो विलेज 2 में इस बात पर जोर होता है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कैसे कम से कम किया जाए। इसमें विभिन्न उपायों से लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर पूरा ध्यान दिया जाता है। सोलर एनर्जी, बायोगैस, बी कीपिंग और बायो फर्टिलाइजर, इन सब पर पूरा फोकस रहता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान को बायो विलेज 2 बहुत मजबूती देने वाला है। In our interview section, we have our Agartala correspondent, Reena Nongmaithan, interacting with Anjan Sengupta, who is the Senior Scientific Officer at the Directorate of Biotechnology, Government of Tripura. आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर अंजन सेनगुप्ता, Senior Scientific Officer, Directorate of Biotechnology, Government of Tripura. So he is the man behind the concept of setting up of BioVillage 2.0 in the state. So sir, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि ये कॉन्सेप्ट जो है BioVillage 2.0 ये एक्चुअली क्या है, एंड ये कॉन्सेप्ट जो है आपने कैसे डेवलप करने का सोचा था? एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेरा जहन में तब आया जब मैं इस तरह का प्रोजेक्ट में कर रहा था, तो मुझे महसूस हुआ कि उस सब प्रोजेक्ट में कुछ कमियां हैं। तो ये कमियां को दूर करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक संपूर्ण ऐसा प्रोजेक्ट किया जाए जिसमें जो कमियां हमने देखे तो उसको भी हम पूरा कर पाए। तो इस सोच को सामने रखते हुए बायो विलेज 2.0 का जो कॉन्सेप्ट है इसको डेवलप किया गया है। तो इस बायो विलेज प्रोजेक्ट एंड देन बायो विलेज 2.0 में क्या क्या डिफरेंसेस है? अच्छा, हम जो प्रोजेक्ट तब कर रहे थे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलेटेड था और एक ही साथ में कुछ पॉलिनेशन का रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो ऐसे में जो बायो विलेज का कंसेप्ट है ये हमारा देश में काफी पुराना है और इस कंसेप्ट में क्या किया जाता है कि जैविक कृषि का ऊपर जोर दिया जाता है, जिसमें कि एक गांव में जो भी बायो विलेज होता है उसमें जैव कृषि किया जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है। लेकिन इसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। क्या प्रॉब्लम्स है कि हम अभी भी हमारा देश में जो है हमारा मानसून का ऊपर हम लोग पूरे तरीके से डिपेंडेंट है। तो हमने एक ऑर्गेनिक विलेज बनाया, इसका सब कुछ ठीक तरह से किया, इसका बाद कुछ भी नेचुरल डिजास्टर जैसे हुआ तो उसमें इसका बर्बादी हो सकता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दिस बायो विलेज 2.0 को डेवलप किया गया। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मुद्दा है, लेकिन इसका साथ में काफी सारे और मुद्दे हैं जो कि एक एंटरप्राइज का फेलियर होने का बाद भी दूसरा एंटरप्राइज इन लोगों को सपोर्ट दे सकता है। जैसे कि जो फार्मर्स या विलेजर्स है उनको क्या लगेगा कि एक एंटरप्राइज का अगर उसमें फेलियर बना तो बाकी एंटरप्राइज से वो इनकम कर सकता है। तो इस सब को जहन में रखते हुए हमने जो अहम बातें और अहम मुद्दे जो इसमें हमने चुना है उसमें 2-3 इश्यूज का बारे में मैं जरूर बात करूंगा। इसमें पहला है कि हम ऐसा जो कंपोनेंट है इसको चुने जिसमें कुछ है जो हमारा जो खर्चा होता है, खर्चा का बचाव होता है उसमें, और कुछ ऐसा कंपोनेंट्स होगा जिसमें हमको इनकम जनरेशन मिलेगा, मतलब आय का वृद्धि होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये कंपोनेंट्स को चुना गया है। तो सर ये प्रोजेक्ट में ये क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा इलाबोरेटली आप हमें बताइए। सब बेनिफिशियरीज को बायो विलेज 2.0 का अंडर में उन लोगों को हमने एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूबलाइट और 5 स्टार रेटेड फैंस ऐसा हमने दिए हैं। फिर दूसरा जो है वो है आपका जिसका घर में कैटल्स है, तो कैटल रहने से उनको हमने बायोगैस यूनिट दिया है। फिर तीसरा जो कंपोनेंट है वो है जो अभी खेती बाड़ी में इंटरेस्टेड है उन लोगों को हमने क्या किया, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड और बाकी जो एग्रीकल्चर का इनपुट्स है वो हमने दिया है जो ऑर्गेनिक इन नेचर है, जो कि हमारा बायो विलेज जो ट्रेडिशनल है उसका वन ऑफ द और द मेन कंपोनेंट्स है।
फिर जिस घर में अपना महिलाओं को मशरूम करने का इच्छा है, तो उनका इच्छा का अनुसार हमने उन लोगों को पूरे बरस के लिए मशरूम का स्पॉन्स और बाकी ट्रेनिंग वगैरह वगैरह सब कुछ हमने देते हैं। इसका बाद जिसका पास पानी है, मतलब वाटर बॉडीज है, उनको क्या करते हैं, फिश फिंगरलिंग, जनरली IMP इंडियन मेजर कार्प, और इसका साथ रेशन और जो मेडिसिन, ये सब हम दिलाते हैं। फिर दूसरा कंपोनेंट है एनिमल रिसोर्स कंपोनेंट। इस एनिमल रिसोर्स कंपोनेंट का दो भाग है। एक में है हम लोग डाकरी या चिक्स, लेयर चिक्स, और डाकरी में हंस का बच्चा जो देता है वो खाकी कैम्बेल का होता है, तो ये दिया जाता है, साथ में रेशन भी दिया जाता है और मेडिसिन भी दिया जाता है। फिर और एक कंपोनेंट है आइदर पिगरी और गोटरी। तो गोटरी में हम लोग जो ब्लैक बंगाल ब्रीड है वो देते हैं, और पिगरी में लार्ज हैम्पशायर जैसा अच्छा ब्रीड है, इसको दिया जाते हैं। फिर जो हमने सोशल कंपोनेंट का बात फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, वो है आपका बी कीपिंग। हमने देखा है कि जब से हमने बहुत सारे खाद यूज करना शुरू किया है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, वहाँ पे एक जगह पे आके हमारा प्रोडक्टिविटी का ठप हो गया है। तो इसका और एक रीजन है, हमारा जो मधुमक्खी जो है, बीज जो है, वो बेसिकली देयर इज ए मास स्लॉटर ऑफ बीज, बी कॉलोनीज ड्यू टू दिस इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो जहां जहां पे हमने ये देखा कि यहाँ पे पॉलिनेशन का जरूरत है, तो इसमें हमारा जो बेनिफिशियरीज है, जो इंटरेस्टेड है, उन लोगों के हमने बी कीपिंग जो यूनिट है वो भी दिलवाया। सो ये एक सोशल इशू है। बी कीपिंग केवल उनको मधु नहीं देंगे, हनी नहीं देंगे, एक ही साथ में वो पूरा एरिया का जो पॉलिनेशन है वो भी करेंगे। इसका बाद हमने जो उनको दिया है वो है बेस्ड अपॉन द विलेज पोटेंशियल, जो उसका संभावना का ऊपर हमारा जो यूनिट और कंपोनेंट है उसको चेंज होता है। जैसे कि कहीं पे हमने ये सोचा कि यहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, तो वहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था किया गया है। कहीं पे हमने सोचा कि नहीं, यहाँ पे जो फ्रूट प्लांट का सीडलिंग देना चाहिए, तो हमने वहाँ पे जो इम्प्रूव का वैरायटी का फ्रूट प्लांट्स का सीडलिंग भी दिया है। ऐसे करके एग्रीकल्चर अलाइड, फिशरी कंपोनेंट, देन एनिमल कंपोनेंट, देन रिन्यूएबल कंपोनेंट और कुछ सोशल कंपोनेंट, ये सबको देके हमने कंपोनेंट को सजाया है। तो ये प्रोजेक्ट जो है कब से शुरू किया हुआ था और ये कितने विलेजेस में ये अभी तक सेटअप किया हुआ है एंड ऑनगोइंग है ये प्रोजेक्ट? हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2018 का जून जुलाई महीने में। हमको 3-4 ऐसा बायो विलेज में ONGC का फंडिंग मिला है उनका CSR से, और अभी तक हम 11 प्रोजेक्ट बायो विलेज प्रोजेक्ट्स है अपना वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, देन धलाई डिस्ट्रिक्ट, गोमती डिस्ट्रिक्ट और सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कर रहे हैं, और इसमें से 5 का काम पूरा हो गया है, बाकी 6 का काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते समय आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है एंड करते थे? आपको पता होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में हम जब काम करता है, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उनको जो रीओरिएंटेशन ऑफ माइंडसेट, उनका जो मानसिकता है, उनको परिवर्तन करना है। तो ये परिवर्तन करने के लिए हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी डायरेक्टरेट का हमारा जो साथी लोग है, इन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल निभाया, और उन्होंने जाके उनको बार बार बात किया कि एक नया टेक्नोलॉजी जब आप एडॉप्ट करने जाएंगे तो इनके लिए काफी सारे एक्सटेंशन वर्क का जरूरत होता है। तो ये एक्सटेंशन वर्क किया। एक ही साथ में हमारा और एक चैलेंज था, जो दूसरा जो लाइन डिपार्टमेंट्स है उनको एक ही प्लेटफॉर्म में लाना। इसके बारे में मैं बार बार जिसका बात करूंगा वो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ट्रेडा, फिर फिशरी, फिर EESL जैसा जो डिपार्टमेंट्स है, ये हमको काफी हद तक हेल्प किया है। हम लोग एक प्लेटफॉर्म में आके काम किया। तो चैलेंजेस तो वही था कि अपना जो फार्मर्स है, अपना जो विलेजर्स है, उनको मोटिवेट करना। और दूसरा एक चैलेंज था जो हमने पहले वाला सब प्रोजेक्ट में देखा है कि हमने ये महसूस किया कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर सफल करना है तो घर का जो महिलाएं हैं उनका योगदान का काफी जरूरत है। तो इसके लिए हम तो इसमें ऐसा कुछ कंपोनेंट रखे हैं जिसमें महिलाएं लोग भी योगदान कर सकता है, और वो भी कुछ हद तक अपना इनकम को वृद्धि कर पाते हैं। तो इसलिए हमने मशरूम कल्टीवेशन का जो कंपोनेंट्स है, मशरूम का रखा है, हमने बायोमास कुक स्टोव रखा है, हमने डाकरी रखा है, हमने चिक्स रखा है। कुछ हद तक जो हमारा जनजाति महिला है वो लोग बहुत अच्छा जो पिगरी करता है, तो वो भी हमने रखे हैं। तो महिलाएं सुबह में अगर ठीक से पका पाते हैं, उसका पकाने का अगर गारंटी है, वो मशरूम कल्टीवेशन करके कुछ हद तक
पैसा इनकम कर सकते हैं। सोलर वाटर पंप अगर हम एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी में हम लोग लगा दिया तो उसमें अगर बिजली का बचत हुआ तो बन गए महिला, उनका पास लीडरशिप आ गए। तो ऐसे करके एक प्रोजेक्ट में जब तक जेंडर का इक्वल कंट्रीब्यूशन और इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो ये बहुत चैलेंजिंग है। ये भी चैलेंज हमने फेस किया, लेकिन अंत तक देखा गया कि महिलाओं जो बहनों है, उन्होंने हमारा पुरुषों से काफी अच्छे हद तक काम किया और इसलिए ये प्रोजेक्ट सक्सेस बना। सर, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला और भी, तो थैंक यू सो मच सर। In our heritage section today, we take you to the land of handicrafts, Longling district of Nagaland. In this part of the district lies the Apaktung, which is a man-made cave located 5.8 kilometers away from Longling town in Apak forest. Our Kohima correspondent gives us the details. The cave has a historical background which dates back to Apaktung, meaning a stone cave is a man-made cave located 5.8 kilometers away from Longland district in Apak Forest, a vicinity of Bongnu village. The cave has a historical background which dates back to 16th century and is recognized as a heritage site in Longland district under the Heritage Conservation and Protection through the implementation by Nagaland Art and Culture Department in the year 2008. The Ahom king, Rura Raja, made this cave when he fled from Godabani, the other Ahom king known as Abaktung. The cave has 4 chambers. The king, Rura Raja, along with his father, Singh Poman, and 2 soldiers, Harman and Hingo, took shelters in that cave. On hearing of his queen's ill health, the king returned to Sivsagar, Assam, and could never return to his cave. It is said that during their stay, they discovered salt water, limestone, crude oil, and some precious stones. The remains of the stone gate, bed, chairs and tables are found in Bongnu village. At present, it still awe and wonders on the onlookers on how this powerful and wise Ahom king came to such a remote forest and made this monumental cave along with the massive stone gate, bed, tables and chairs. It is intriguing to know if all of their claims of discovery are true. Could this abandoned place have a treasure buried and hidden? The answer remains inscrutable, a fact enshrouded in mystery. The cave is surrounded by virgin forest and one can enjoy listening to the enchanting melodies of birds, insects, animals and soft rustle of the wing beneath the cave. In the evening, colony of bats fill their roasting chambers in the cave. For Northeast Diary, this is Asanyo from AIR News, Kohima. And now, let us listen to this melodious tune from the wonderful state. With that, we have come to the end of this edition of Northeast Diary. Do join us next week to hear more stories from this enchanting part of India.
It was brought to you by the News Services Division of All India Radio.